एक एक्टर के लिए दैट एनर्जी सुपर इम्पोर्टेंट कि हाउ दे आर रिस्पॉन्डिंग टू यू, The cues basically, वेरी हाँ. इम्पोर्टेंट. जब भी आपको लगे ना किसी की ईगो थोड़ी उड़ रही है, बोलना ऑडिशन रूम में जाओ बस. ये तो है, सच बोली बिल्कुल. आई वुड से आई हैव अ लॉट टू ऑफर दैट हैज नॉट बीन टैप्ड इनटू येट. आई थिंक इट्स अ वेरी इम्पोर्टेंट कॉम्बिनेशन ऑफ द स्क्रिप्ट विद द डायरेक्टर एंड द कैरेक्टर. वो अगर आप सेम स्क्रिप्ट को आप अनुराग कश्यप को दोगे या इम्तियाज़ अली को दोगे, आपको दो बहुत अलग फिल्म्स मिलेंगी. आई डोंट वांट टू लिमिट माई सेल्फ सिंग की रोम कॉम या थ्रिलर या ऐसे कुछ. आई वांट टू डू एवरीथिंग. नवाज सर समवन दैट आई रियली वांट टू वर्क Oh विद. wow. I think he's so fabulous as an actor. For Good me, one. for us to be a good couple on screen, we do not have to be a couple off screen. Hi, I'm Avantika Dasani and you're watching Filmy. अवंतिका, अगर मैं इंडस्ट्री की भी बात करती हूँ तो यहाँ पर भी हम कई बार देखते हैं ना ऐसा कि मेल फीमेल को लेके डिस्पैरिटी वैसा नहीं, रोल्स को लेके अब थोड़ा कम हो रहा है कि फीमेल सेंट्रिक फिल्में भी बन रही हैं, बट देन देयर इज ऑलवेज अ पे डिस्पैरिटी दैट वी हैव ऑलवेज सीन. अभी एक्ट्रेसेस आके उसके बारे में बात करती हैं या खुल के बोलती हैं, पहले ऐसा नहीं होता था. What do you think or how do you think that this could change or this should change in the industry? So I think again, there's a lot of different aspects to this. I think it's also the business and the economics of things. There's the fact that when you look at say a Shah Rukh Khan film, now Shah Rukh Khan is going to bring in a certain number and is going to bring in, you know, he has that mass following and all of that. He's a superstar, the last living Last of the superstar. I agree. So, you know, when you're talking about forces like that, you can't compare. And you can't say that, well, it's necessarily the equals, correct? But like you're saying, I think the more we have more representation on screen, you know, when you have women-centric films, when you have the opportunities given in the same place, कि we are getting the opportunity to headline a film. When we are getting the opportunity to say कि ये इस पे चल रही है ये film या ये show, you know, this is the star, this is who it is of the show, this is the actor. तो वो equal दर्जा जब मिलेगा ना, I think तभी बात तब होगी. तो मिथ्या कैसे मिली थी? मिथ्या कैसे अवंतिका मिली को, थी? हाँ. So it was during that lockdown that very interestingly I was used to giving auditions. मतलब आप जाओ कास्टिंग डायरेक्टर के ऑफिस में, आप मिलो, यू नो, वो एनर्जी बहुत अलग होती है. हाँ. आप किसी के साथ काम कर रहे हो तब. एंड आई थिंक दिस वाज माय फर्स्ट और मे बी द सेकंड, नॉट मोर देन दैट, टाइम गिविंग एन ऑडिशन ऑन स्क्रीन. यू नो, मतलब वो स्काइप जैसे वो लैपटॉप तो घर पे होने लगे थे ऑडिशंस, सेल्फ रिकॉर्डेड. हाँ. बट इट वॉज माई फर्स्ट टाइम बिकॉज उसके पहले एवरी टाइम आई वुड गो टू द कास्टिंग ऑफिस और मतलब जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर के ऑफिस थे उन पे जाके, उधर जाके. तभी तो पहले ओपन इंट्रोडक्शंस भी होते थे. हाँ. बट दैट वॉज द फर्स्ट टाइम. सो एक तो आई वॉज सो ओवरवेल्म कि मतलब ये कैमरा कैसे डाले और ये मतलब यू नो क्यू कैसे आएगा, एंड यू नो यू डोंट हैव दैट एनर्जी टू वर्क ऑफ समबडी, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यार. एक एक्टर के लिए दैट एनर्जी सुपर इम्पॉर्टेंट कि how they are responding to you, the how cues basically, very important of the co-actor. So I was very nervous and I was just like, you know, मतलब ये कैसा जाएगा and stuff. But I gave those auditions and it was first couple of times तो वो lag हो रहा था इंटरनेट के वजह से. अच्छा. हाँ, तो क्यों लेट आ रहे थे तो I was also like मतलब वेट करके ऐसे दे रहे थे. फिर अलग ही रिएक्शन आता है सामने से, क्योंकि आप डायलॉग का वेट कर रहे हो, आप क्यू का वेट कर रहे हो, आपको पता नहीं कि वो स्टक है कि वो रिएक्ट कर रहे हैं वैसे कि क्या हो रहा है स्क्रीन पे. तो इट वाज क्वाइट नर्व रैकिंग. एंड आई रिमेंबर प्रियता द कास्टिंग डायरेक्टर वेरी स्वीटली आफ्टर द फर्स्ट टेक शी लुक्ड एट मी, शी इज लाइक रिलैक्स, calm down, let's try this again. And I was just like, okay, yes, I need to like relax, just do a couple of breaths. And I gave it. And I thought कि मतलब चलो एक्सपीरियंस था ये भी गंदा ऑडिशन देने का. Which one was the scene? उसमें याद है? It was actually 2 scenes that I had done.
One was the scene which I was meeting Huma, the first interaction with me and Huma's character. That was the first one. And the second one was where the sort of the dual-sided bit of Riya comes out, where it's me, the principal, and Huma's character sitting and we're having that conversation. I got that. So that was the second scene that we did, and that was the one that really clicked with them. Samir sir, Samir Nair from Applause, and Goldie Bell, who told me that, you know, there was something in your eyes that really worked, and it was this whole thing that in the other scene, because it's the first conversation, you have that sort of innocence, you have that, you know, we don't know it, she's just having a regular conversation, and then in that second scene that you have to have that flip, you know, where it's an innocent face, but the intensity and the intent can be seen, and that's what they felt. They're like, we needed that sort of switch to happen, and that worked really well. So yeah, that was the really exciting. Now I'm getting so excited thinking about going back to that, you know? है ना? Yeah. So when जब आपने दे दिया था पहली बार, तो ऐसा लग रहा था कि सेकंड वाले के लिए भी कॉल आएगा, थोड़ा एक्साइटमेंट रहता है, नर्वसनेस रहता है अंदर कि होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, ऐसा वाला. You know, but that's what I'm saying, कि वो टाइम पे वो nervousness तो in general था, but there were a couple of auditions that I'd given right after. And because it was the first couple of times that I was doing this whole Zoom audition, मेरे तो होप्स मतलब ऐसे ही थे कि हाँ अभी मतलब, and this was, I had done a lot of auditions by this time. So I had also learned the idea कि आप ज़्यादा होपफुल नहीं रहना चाहिए. थोड़ा होप कम रखना चाहिए इंडस्ट्री में आने के लिए. वो 100% आई थिंक, पर वो आप इंडस्ट्री में आके आप सीखते हो धीरे धीरे, बिकॉज आपको लगता है हाँ मतलब आप पहले 2-3 ऑडिशन देते हो तो आपको लगता है मे बी वाओ फॉर एन ऑडिशन आई वॉज टू गुड, मैंने तो आई नेल्ड इट, अरे मतलब ये मेरा है, ऐसा है. और शॉर्टलिस्ट हो जाओ पहले जब, तो शॉर्टलिस्ट मतलब वो तो बहुत दूर की बात है. पहले तो आपको लगता है कि बस हो गया काम. नहीं, फिर कॉल आता है ना, मैम यू आर शॉर्टलिस्टेड, फिर आता है मैम रिलीज योर डेट्स, यू आर नॉट सिलेक्टेड. पर वो शॉर्टलिस्ट का कॉल भी कितने टाइम बाद आता है. सच्ची. पहले तो आता है थोड़ा फीडबैक, ये ऐसे नहीं, आप ऐसे करके भेज दो. वेरी बैड, यू नो. आपको आई थिंक मैं आपको 2-3 एक्टिंग कोचेस के नंबर देती हूँ, ये थोड़े वर्कशॉप्स देती हूँ. आई थिंक आपको इधर जाना चाहिए, वो जाना. नो आई एम जोकिंग, आई एम जस्ट सेइंग कि आपको लगता है कि फर्स्ट 2-3 ऑडिशन में अरे किल कर दिया ये वो, देन आप बाय चांस अगर आपको देखने मिले आपने क्या किया है, फिर आपको लगता है शिट, ये तो मैंने सच में खराब किया था, बहुत खराब किया है. देन आई थिंक ईगो, ह्यूमिलिटी सब वो यू नो लाइन में आ जाती है, करेक्ट होती है. हाँ. जब भी आपको लगे ना किसी की ईगो थोड़ी उड़ रही है, बोलना ऑडिशन रूम में जाओ बस. ये तो है, बस सच बोली बिल्कुल. एंड देन आई थिंक दैट्स व्हेन यू आल्सो अंडरस्टैंड कि it's just something that you have to go through. You have to give audition after audition. You have to give a lot of bad auditions. So Avantika, what next? Matlab, after this, you happy being like what you have got, or you think you deserve more in the industry? Abhi aage. Ooh, that's an interesting question. I don't know if me saying that I deserve more is a right thing or a wrong thing, but I would say I have a lot to offer that has not been tapped into yet. I think there's a lot that I would love to showcase, that I would love to sort of dive into, and for whatever reasons the right opportunities haven't clicked yet. It's also been a long wait for a lot of things, and I'm learning that that's just the way the industry is. B, especially right now, like everyone I ask is going through this. It's heartbreaking, it's confusing, it's demotivating. There's so much, but I would say that it's gonna change. Just positive thinking. It's gonna be different. It's gonna be very exciting. And who all directors and actors you want to work with? It's a very long list. It's Very long, no? very long list. But I think
to my mind now that you had just said it also, I think Nawaz sir is someone that I really want to work Oh with. wow. I think he's so fabulous as an actor. And I think that there's just this sort of magic, that he brings onto screen. I think he's definitely someone that I would really like to share screen space with and learn from. Just learn from being around him. There's so many, Pankaj Tripathi, Manoj Bajpayee, Seema Pawa. There's just... Anyone actor you have to do romance with on screen? Who do you think I would look good with? Oh, that's a good question. सोच रही हूँ. सोच के Look बताओ. good with सिद्धार्थ मल्होत्रा. Taken है अभी लेकिन दूसरे तो ले मतलब लेते I हैं. can I have to perform अरे with मुझे- ना एक्टर है यार. मेरा रुको, काम है. सबने This तो is शादी work. कर लिया यार, कोई तो बचा नहीं तो मुझे मतलब वो लगता है काम अभी नहीं तो. करेंगे क्या? अरे करो करो, मैंने कहा बोला. घर पे बैठा क्यों? दो कि शादी हो अरे गई भाई, है, घर अच्छी पे pairing. बैठो. No romance for you. रुको, वरुण शादीशुदा रुक जाओ. और कौन बचा है इंडस्ट्री But again I'm saying, अच्छा of ठीक है, बताती हूँ, course, चलो फिर मैं. I don't have to. हाँ, रुको. 1 second. हाँ. For Good me, one. for us to be a good couple on screen, we do not have to be a couple off screen. Very important. They can be a प्यार couple with किया नहीं whoever they जाता, want. प्यार हो जाता है. ये भी तो सुना है, सेट पे भी हो जाता है. तो मतलब हर सेट पे नहीं होता है ना, हर मूवी पे जाओगे नया नया प्यार होगा You क्या? will look very good with सिद्धांत चतुर्वेदी. Trust you me. Okay, sure. है ना? I'm sure. Great. Is casting directors listening to this conversation? मुकेश Make it छाबड़ा? happen. मुकेश छाबड़ा, Please. कास्टिंग बे, Please, अभिषेक come बैनर्जी, on. अनमोल. Come on. प्लीज लिसन टू अस. एक फिल्म तो बनी जानी चाहिए. वैसे और भी बता देती हूँ मैं. रणवीर ना सिंह के please. साथ भी यू लुक गुड. I think what a fire energy it will be now. है Like ना? such a dynamic. Love it. कपल ऑन स्क्रीन. Love it. I think it'll be so cool. डायरेक्टर्स के नाम नहीं लिए, किनके साथ काम करना. Anurag sir. ऑन टॉप ऑफ द लिस्ट. Yeah. Imtiaz Ali. बिल्कुल. For sure. I love Tamasha, Jab We Met, Leila Majnu. Like these are films that I really really love, and I think that his sort of vision. हिज वे ऑफ लाइक वीविंग दैट लव स्टोरी. एक चीज हमेशा कॉमन होती है उसमें, वो एंड में जाके मिलते नहीं है. वो लैला मजनू टाइप ही लव स्टोरी बन जाती है उनकी. बहुत सारी मूवीज में हुआ है ऐसा. हाँ, जब वी मेट. जब भी मैं टेक मुझे लगता है थोड़ा एक्सेप्शनल केस थी. हाँ. उसमें मिल जाता है. हाँ. अदरवाइज रॉकस्टार देख लो, एंड में बहुत ट्रैजिक स्टोरी हो जाती है फिर. लेकिन इम्तियाज अली इज इम्तियाज अली भाई, इज अनदर लेवल. Yeah. है ना? Yeah. एवरीवन वांट्स टू वर्क विद हिम. I love like his storytelling. I think I really connect to it. I think with all of his characters, it's just there's very interesting sort of psyche to his characters. And he always romanticized with the female characters. I didn't want to say it myself, but I was like, yeah. That's ना? what I love the way the female characters are in his all of his projects. Like He's always fair with the female character. that's the thing. They are full. हाँ. They are full human Yes. beings. That's what I love about it. Is not ki this is a good girl. हाँ. And this He is a do this not treat girl. them as objects. Yes. It's also the idea that it's not a headline, na. Ki she's the good girl or she's the wife or she's whatever. It's not a tagline. This is a full human being with good and bad. उसका अपना and point of ugly view and भी है. सब, there's all of that sort of that encompasses it. इम्तियाज सर सामने होते तो वो बिल्कुल मतलब उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं सुन के. है ना? I hope. थैंक यू सो मच अवंतिका. Thank you for having me.